Hello everyone, I am Dr. Pradeep Adaka. I teach Geology optional for UPSC and Forest Service Mains examination. So recently I have started Geology optional channel on YouTube, and this channel will be dedicated to Geology optional only. And regularly I will post videos for the preparation of this particular optional. And we'll start this video. So this is the first video. We'll start this video with mineralogy chapter, and within the chapter one of the topics which students find difficult, that is crystallography. So we'll start with crystal systems, and in the examination they ask questions about the crystal systems to write about the symmetry elements of particular crystal system. So we'll be looking at some of the previous year's questions, what has been asked, and based on that we'll proceed. So this video and the following videos, so there will be few more videos which will be dealing with this particular topic, that is crystal systems. How do you answer those questions? So there will be few more videos, so you have to follow them in this particular order. Okay, so we'll start with some of the PYQs so that you will have an idea so what is asked in the examination. And the videos will be bilingual, so I will be using Hindi also here and there. So let us look at the previous year's questions first so that you will have an idea what is being asked in the examination. So if you see, okay, just give me a minute. So with neat sketches describe the symmetry elements and forms of normal class. Now normal class is that particular class which has maximum symmetry elements. So you will be asked to write about the symmetry elements and forms of normal class of different crystal systems. So you have isometric system, like that you have tetragonal, you have hexagonal, right, orthorhombic, triclinic, monoclinic, etc. So they will be asking you to write the symmetry elements and forms of normal class of isometric system, and also you have to name few minerals that crystallize under this particular system. So name three minerals belonging to this particular class. Okay, so this was given for 20 marks. So the questions have appeared for 20 marks, for 15 marks, for 8 marks also. All right, so write briefly about isometric system and enlist four minerals with chemical composition. Now when you are mentioning the names of minerals as examples, you have to also write the chemical formula, not just the name but also the chemical formula you have to mention. Okay, at least you have to remember 4 to 5 minerals, that will be sufficient. Now let us look at another question. Describe symmetry elements and unit form of the normal class of cubic system. So same isometric system here, बस नाम बदल दिया है. Isometric system or cubic system is the same. Then mention the names of common minerals that crystallize under this system. So this was asked for 10 marks, right? The same question can be asked for 20 marks, and also it can be asked for 8 marks or 10 marks also. You should be prepared for that. Then with neat sketches describe the symmetry elements and forms of normal class of orthorhombic system. So till now we have seen isometric system and orthorhombic system. Isometric system has been repeated many times, right? So this was regarding the orthorhombic system, and also name three minerals of this particular class. Okay. Then describe the symmetry elements and forms of normal class of tetragonal system. Name some common minerals belonging to this particular system. So again, so this time tetragonal system was asked. So till now we have isometric system, orthorhombic, now tetragonal. Briefly describe symmetry classes of tetragonal system. Again it was repeated. Now it was asked long back, 2001. Then briefly describe symmetry classes of monoclinic system.
The thing is, in monoclinic and triclinic system, there are not much symmetry elements. So there are not many symmetry elements. So the chances of monoclinic or triclinic appearing in the examination is very slim. Okay, mainly focus on isometric system, orthorhombic, tetragonal and sometimes even hexagonal. मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक का बहुत कम चांस है एग्जाम में आएगा बोल के, क्योंकि उसमें ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स है नहीं. ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ट्राइक्लिनिक पे तो सिर्फ. Describe hexagonal system and its symmetry classes. So now you see how these questions are asked. So crystal systems में किस तरह से questions आते हैं, now you have an idea, right? So इसका जो notes है, that I have already posted it on my Telegram channel. So geology optional, right? प्रदीप अड़का जियोलॉजी ऑप्शनल के आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो मिल जाएगा चैनल. रिसेंटली आई हैव पोस्टेड नोट्स एंड आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. जो भी यूट्यूब पे वीडियो होगा उसका जो रिलेटेड नोट्स होगा दैट विल बी posted on the telegram channel. All right, so let us see some basic stuff, right? So if you want to आंसर सच क्वेश्चंस, सो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जब आंसर करोगे तो बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. नाउ बिफोर वी एंटर इनटू दोस बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स, लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स. तो बाकी जो सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग आगे देखेंगे, मिरर प्लेन्स के बारे में, ऑल दोस थिंग्स, राइट, रोटेशनल एक्सिस, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर. बट बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक चीजें जो है दैट इज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. सो वंस यू हैव द this particular knowledge, then you can move on to अदर सिमेट्री एलिमेंट्स. तो ये बहुत ही बेसिक है एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. सो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सो दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू राइट इन द सिमेट्री एलिमेंट्स. सो लेट अस लुक इनटू द relationship between the crystallographic axis that you have to write at the beginning of the symmetry elements, right? So let us start with isometric system. So in isometric system, the ABC crystallographic axis. So ABC, these are imaginary crystallographic axis. Okay, so they pass through the center of a ideal crystal. So एक ideal crystal के center से pass होते हैं ABC crystallographic axis. ये जो crystallographic axis है इसके बारे में हम लोग और बाद में डेप्थ में डिस्कस करेंगे later on in the coming videos. But for now, just imagine these are three axes that pass through the center of an ideal crystal. Okay, and the relationship between these axes, this is the most fundamental thing that you have to write at the beginning of your answer regarding the symmetry elements. Okay, so in isometric system, the ABC crystallographic axis, so your ABC axis, so A, all right, so B axis, C axis एंड ए जो है ये z एक्सिस में जा रहा है, राइट. सो b एक्सिस वो x एक्सिस में है, c एक्सिस इज ऑन y एक्सिस, a एक्सिस इज ऑन z एक्सिस. तो उनको x y z एक्सिस पता है ना. सो हियर वी हैव a b एंड c एक्सिस. सो ये जो तीनों एक्सिस हैं विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए आइडियल क्रिस्टल, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है इन आइसोमेट्रिक सिस्टम. नाउ इन आइसोमेट्रिक सिस्टम, हियर यू कैन सी these three axes ABC, they are of equal length. They are of equal length. That is why we write A is equal to B is equal to C. ये याद रखना है तुमको, ठीक है. In isometric system, all the three axes they are of equal length. Then angle between these three axes, that is alpha, beta and gamma, they are also perpendicular to each other. Alpha, beta and gamma यानी ए बी सी एक्सिस जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो अल्फा जो एंगल है, अल्फा इज बिटवीन, ऐसे याद रख लेना, अल्फा ए से स्टार्ट होता है तो दिस इज द एंगल बिटवीन सी एंड बी. अल्फा इज द एंगल बिटवीन सी एंड बी.
सी एंड बी के बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। ओके, देन बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। बी ए एंड सी के, तो बीटा बी से स्टार्ट होता है, तो बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये तुम्हारा बीटा एंगल है। ओके, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। गामा जो है वो ए एंड बी के बीच का एंगल है। Gamma is the angle between A and B. So here alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. All the three axes A, B and C axis, they are mutually perpendicular to each other. For example, यहाँ पे pyrite दिया है, so pyrite is an example which crystallizes under this particular system. So remember these. ठीक है, ये isometric system में A, B, C crystallographic axis have equal length. Angle between alpha and beta and gamma, it is 90 degrees. They are mutually perpendicular to each other, all the three axes. All right, तो ये याद रखना आपको, क्योंकि हर बार जब भी आप कोई आंसर लिखोगे तो स्टार्टिंग तुम्हारा जो सिमेट्री एलिमेंट्स है, यू विल स्टार्ट विद दिस, द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सिस। यू रिमेंबर दिस, ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है, क्रैम देम, ठीक है। सेकंड, टेट्रागोनल सिस्टम में हियर आल्सो one thing is common, you see alpha, beta and gamma के बीच में जो एंगल है that is 90 degrees. So all the three axes are mutually perpendicular to each other, but one axis is longer than the other two axes. तो यहाँ पर देखो C axis जो है, C axis it is longer than A and B. A and B are of equal length. A और B equal length का है, लेकिन C axis जो vertical axis है वो ज्यादा बड़ा है. So that is the only difference. So you can see here A and B are equal, but C is longer. Okay, so tetragonal crystals are shaped like four-sided pyramids or prisms. So prisms are these jar-like shape. They have jar-like shape where you have four faces that are parallel to each other. उनको बोलते हैं हम लोग prisms. So this is a prism. So here alpha, beta and gamma, they have 90 degrees relationship, so they are mutually perpendicular. These axes are perpendicular, but one axis is longer than the other two axes. So A and B are of same length. So A and B जो है ये horizontal plane में है, right? The axis A and B, these are on the they are on the horizontal plane. और C axis जो है ये vertical है. So A and B are of same length. C is longer. For example यहाँ पर zircon. So ये तुम्हारा example है. Zircon is the mineral which crystallizes under tetragonal system. Then we have orthorhombic. Now orthorhombic में देखो यहाँ पर भी same है, alpha, beta and gamma, they are mutually perpendicular with each other, but A, B, C, all the three axes are of different length. A is not equal to B, is not equal to C. A, B, C तीनों अलग length के हैं. Okay, so they are also like rectangular prism, but alpha, beta and gamma, they are 90 degrees, but A, B, C जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है तीनों अलग लेंथ के हैं. आइसोमेट्रिक में तीनों सेम लेंथ थे. टेट्रागोनल में एक लंबा था एक्सिस, सी एक्सिस वाज लॉन्गर, अदर टू एक्सिस वर ऑफ सेम लेंथ. इन ऑर्थोरोम्बिक ऑल द एक्सिस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. ऑलराइट, सो यहां पर टोपाज इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल. सो जो नोट्स है वहां पर चार पांच मिनरल्स के एग्जांपल दिए हुए, यू कैन गो एंड look at the notes. I have posted that on the Telegram channel. All right. So next जो तुम्हारा crystal system है, that is hexagonal system. Okay. So in hexagonal system, here you can see example. Here is amethyst. So amethyst जो है ये basically quartz है. सो इट इज बेसिकली क्वार्ट्ज विथ इम्प्यूरिटीज. यहाँ पर इम्प्यूरिटीज की वजह से, आयरन इम्प्यूरिटीज की वजह से इसको पर्पल कलरेशन आता है. सो दिस इज ऑल्सो ए वैल्यूड क्रिस्टल, राइट. एमेथिस्ट इज ए टाइप ऑफ क्वार्ट्ज. ये क्वार्ट्ज है बट विथ इम्प्यूरिटीज. इम्प्यूरिटीज गिव्स दैट पर्पल कलर, ठीक है. सो हियर यू कैन सी दिस इज यूनिक. हेक्सागोनल में वी हैव फोर एक्सिस, नॉट थ्री बट फोर एक्सिस. सो यू हैव ABC axis which are, so we have ABC axis. तो हमारे पास ABC axis है, सॉरी
दीज आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है एबीसी एक्सिस, और जो डी एक्सिस है ये वर्टिकल प्लेन में है, सो डी एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन, so you can see here d axis is in the vertical plane, और जो abc एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, सो d एक्सिस कैन बी लॉन्गर और इट कैन बी शॉर्टर। abc एक्सिस सेम लेंथ के होंगे, पर d एक्सिस जो है या तो ये लंबा हो सकता है या फिर ये छोटा हो सकता है, इट कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द abcd axis, the length. Then if you take angle, so alpha is equal to beta is equal to 90 degrees, but यहाँ पे जो दो एक्सिस हैं, you see A and B एक्सिस, इनके बीच में 120 डिग्रीज का एंगल है, they have 120 degrees angle. So here alpha is equal to beta is equal to 90 degrees, but gamma is 120 degrees. So that is the relationship in hexagonal system. So यहाँ पर चार एक्सिस हैं, not three but four axis. Then we have microclinic, sorry we have sorry microclinic बोल रहा हूँ, monoclinic system. We have monoclinic system. In monoclinic system, ABC axis they are not equal. Okay,